In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you are having a great time. I'm Madhya Ejaz, your English teacher from Aziz Begum Memorial School. So after vacation, we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is A Helpless Situation. First, I'm going to read this, then I will explain you. Once or twice a year, I get a letter of a certain patron, a patron that never materially changes in form and substance. Yet I cannot get used to that letter. It always astonishes me. It affects me as the locomotive always affects me. I say to myself, I have seen you 1,000 times. You always look the same way, yet you are always a wonder and you are always impossible. To contrive you is clearly beyond human genius. You can't exist, you don't exist, yet here you are. Every year मुझे एक या दो बार जिसका एक ही तरह का पैटर्न होता है, वो पैटर्न जो कभी भी चेंज नहीं होता, ना ही उसकी फॉर्म चेंज होती है और ना ही सब्सटेंस। फिर भी मैं उस लेटर से मानूस नहीं हुआ। मैं हमेशा उस लेटर को पढ़कर हैरान हो जाता हूँ और ये लेटर मुझे ऐसे ही इफ़ेक्ट करता है जैसे कोई लोकोमोटिव या कोई पावरफुल चीज़ करती है। और मैं अपने आप से कहता हूँ, मैंने तुम्हें 1,000 टाइम्स देखा है, तुम हमेशा ही एक जैसे होते हो, यट तुम हमेशा ही मेरे लिए एक वंडर हो और इम्पॉसिबल भी। तुम्हें सही से समझ पाना किसी जीनियस ह्यूमन के बस से भी बाहर है। तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी तुम मेरे सामने हो। I have a letter of that kind by me, a very old one. I yearn to print it, and where is the harm? The writer of it is dead years ago, no doubt, and if I concealed her name and address, her this world address, I'm sure her shade will not mind, and with it I wish to print the answer which I wrote at the time but probably did not send. If it went, which is not likely, it went in the form of a copy, for I find the original still here, pigeonholed with the said letter. मेरे अपने पास इस तरह का लेटर है जो कि मेरा है, बहुत पुराना। मैं बहुत चाहता हूँ उसे प्रिंट करना और उसमें कोई हार्म भी नहीं है, क्योंकि इसको लिखने वाली जो हैं वो उनको फौत हुए कई साल गुजर गए हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं उनका नाम और एड्रेस कंसील रखता हूँ तो मुझे यकीन है कि उनकी रूह बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी, यानी उनका शेड बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। इन सब के बाद मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसका आंसर भी प्रिंट करवाऊं जो मैंने उसी वक्त लिख दिया था, बट शायद उन्हें सेंड नहीं किया, और किया भी जिसका चांस बहुत कम है। तो इस जवाब की कॉपी ही सेंड की होगी, क्योंकि ओरिजिनल तो अभी भी मेरे पास ही है। पिजन होल्ड उस लेटर के साथ ही हिफाजत से रखी है। टू दैट काइंड ऑफ लेटर वी ऑल राइट आंसर्स विच वी डोंट सेंड, fearing to hurt where we have no desire to hurt. I have done it many a time, and this is doubtless a case of the sort. ये उस तरह का लेटर है जिसका आंसर हम सब लिखते हैं, लेकिन कभी सेंड नहीं करते, इस खौफ से कि कहीं हमारे जवाब से कोई हर्ट ना हो जाए। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है और ये बिल्कुल इसी तरह का केस है। Now let's come to the letter. First I am going to read you the letter. The letter, ex-California, June 3rd, 1879, Mr. S. L. Clemens Hartford, Con. Dear sir, you will doubtless be surprised to know who has presumed to write and ask a favor of you. Let your memory go back to your days in the Humboldt mines. 62-63. You will remember you and Claggett and Oliver and the old blacksmith Tillo lived in a lane to which was halfway up the gulch, and there were 6 log cabins in the camp, strung pretty well separated up the gulch from its mouth at the desert to where the last claim was, at the divide. The lean-to you lived in was the one with a canvas roof that the cow fell down through one night, as told about by you in Roughing It. My uncle Simmons remembers it very well. He lived in the principal cabin halfway up the divide along with Dixon and Parker and Smith.
It had two rooms, one for kitchen and the other for bunks, and was the only one that had. You and your party were there on the great night, the time they had dried apple pie. Uncle Simmons often speaks of it. It seems curious that dried apple pie should have seemed such a great thing. But it was, and it shows how far Humboldt was out of the world and difficult to get to, and how slim the regular bill of fare was 16 years ago. It is a long time. I was a little girl then, only 14. I never saw you. I lived in Washoe. But Uncle Simon ran across you every now and then, or during those weeks that you and party were there working your claim, which was like the rest. The camp played out long and long ago. There was not silver enough in it to make a button. You never saw my husband, but he was there after you left, and lived in that very lean-to, a bachelor then but married to me now. He often wishes there had been a photographer there in those days. He would have taken the lean-to. He got hurt in the old Hal Clayton claim that was abandoned like the others, putting in a blast and not climbing out quick enough. Though he scrambled the best he could, it landed him clear down on the train and hit a coyote. For weeks they thought he would not get over it, but he did, and is all right now. Has been ever since. This is a long introduction, but it is the only way I can make myself known. The favor I ask, I feel assured your generous heart will grant. Give me some advice about a book I have written. I do not claim anything for it, only it is mostly true and as interesting as most of the books of the times. I am unknown in the literary world, and you know what that means unless one has someone of influence like yourself to help you by speaking a good word for you. I would like to place the book on royalty basis plan with anyone you would suggest. This is a secret from my husband and family. I intend it as a surprise in case I get it published. Feeling you will take an interest in this, and if possible write me a letter to some publisher. Or, better still, if you could see them for me and then let me hear. I appeal to you to grant me this favor. With deepest gratitude, I thank you for your attention. Now I am going to explain you this letter. The letter, ex-California, June 3, 1879, Mr. S.L. Clemens, Hartford, Con. डियर सर, आप बिलाशुबा ये जानकर हैरान होंगे कि कौन है ये जिसने आपसे मदद मांगने का सोचा। तो आपकी मेमोरी को हमबोल्ट माइंस के दिनों की तरफ ले चलते हैं। ये 62-63 ईयर की बात है कि आपको याद आ गया होगा कि आप क्लैगेट, ओलिवर एंड ओल्ड ब्लैक स्मिथ उस ज़माने में एक लीन यानी शेल्टर में रहा करते थे, जो कि गल्च मीन्स घाटी के करीब था, और वहाँ कैंप में 6 लॉग कैबिन्स थे। लॉग मीन्स लकड़ी, 6 लकड़ी के कैबिन्स थे जो कि गल्च घाटी के चारों तरफ थे। वो लीन यानी शेल्टर जिसमें आप लोग रह रहे थे, जिसकी रूफ कैनवस की थी। कैनवस मीन्स मोटा कपड़ा, मोटे कपड़े की रूफ थी, जिससे एक रात काव भी गिर गई थी, जो कि आपने ही मेरे अंकल सिमन को बताया था जब आप वहाँ रहते थे। और मेरे अंकल को ये बात बहुत अच्छी तरह याद रही। मेरे अंकल प्रिंसिपल कैबिन में रह रहे थे, जिनके साथ डिक्सन, पार्कर और स्मिथ भी थे। उस केबिन में 2 रूम्स थे, एक किचन के लिए और दूसरे में बंक्स रखे थे, और वो वाहिद केबिन था जिसके 2 रूम्स थे। ऑन द ग्रेट नाइट आप और आपकी पार्टी वहाँ थी। ये वो वक्त था जब आप एप्पल पाई ड्राइड करते थे। अंकल सिमन्स बहुत जिक्र करते हैं और ऐसा महसूस होता है उनकी बातों से कि ये ड्राइड एप्पल पाई बहुत ज़बरदस्त होगा, और यकीनन होगा। इससे ये नज़र आता है कि हमबोल्ट कितना दुनिया से दूर है और उस वक्त अच्छा खाना मिलना कितना मुश्किल होगा। यहाँ बिल ऑफ फेयर का मतलब मुख्तलिफ किस्म के अच्छे खाने का मेन्यू है। 16 ईयर्स अगो ये एक लंबा वक्त है। उस वक्त तो मैं छोटी थी, सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड की। मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैं वैशो में रहती थी, लेकिन अंकल सिमन आपसे मिलते रहते थे। ये उन वीक्स की बात है जब आप और पार्टी वहाँ वर्क कर रही थी औरों की तरह। कैंप में काम बहुत ज़्यादा था, बल्कि ओवरवर्कड हो गया था, लेकिन उससे इतना भी सिल्वर जनरेट नहीं हो रहा था कि एक बटन भी बन सके। आप कभी मेरे हस्बैंड से नहीं मिले,
لیکن انہوں نے بھی اسی کیمپ میں ورک کیا ہے۔ تب تک آپ وہاں سے جا چکے تھے۔ میرے ہسبینڈ اسی لین میں رہے جس میں آپ رہتے تھے۔ اس وقت وہ بیچلر تھے، لیکن اب مجھ سے ان کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ اس وقت کوئی فوٹوگرافر ہوتا تو وہ اس لین کی پک ضرور لیتے۔ میرے ہسبینڈ اولڈ ہیڈ کلیٹن میں انجرڈ ہو گئے تھے، جو دوسرے کلیمز کی طرح بالکل سنسان یا ابنڈنٹ تھا۔ جب وہاں بلاسٹ کیا گیا تو وہ فوراً سے وہاں سے جمپ نہ کر سکے، حالانکہ وہ اسکریمبلڈ کر کے وہاں سے نکل گئے تھے جتنی ان کی طاقت تھی، اور اسی کوشش کی وجہ سے وہ ٹرین تک پہنچ پائے جو کہ پائٹ یعنی نارتھ امریکن انڈین پیپل کی جگہ تھی۔ وہ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میرے ہسبینڈ ریکور نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور اب تک صحت مند ہی ہیں۔ یہ بہت لانگ انٹروڈکشن ہو گیا، لیکن میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا اس کے سوا کہ میں آپ کو اپنی پہچان کروا پاتی۔ جو فیور میں آپ سے مانگنے والی ہوں، آئی ایم شیور آپ کا جنرس ہارٹ مجھے وہ فیور ضرور دے گا۔ میں ایک بک لکھ رہی ہوں اور آپ سے ایڈوائس چاہتی ہوں۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں کہوں گی کہ میری بک اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے جتنی کہ اس ٹائم کی بکس ہوتی ہیں۔ میں لٹریری ورلڈ یعنی ادب کی دنیا میں بالکل اننون ہوں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ اس ورلڈ میں اپنی پہچان بنانے کے لیے کسی انفلوئنس کا ہونا کتنا ضروری ہے، جیسے کہ آپ ہیں۔ میں اپنی بک رائلٹی بیسس پلان کے تھرو پلیس کرنا چاہتی ہوں، جسے بھی آپ سجیسٹ کریں۔ جب بھی کوئی ان بکس کو خریدے تو اس کے کچھ % رائٹر کو بھی ملیں۔ یہ وہ سیکرٹ ہے بک کے بارے میں جو میرے ہسبینڈ اور فیملی کو نہیں معلوم، اور میں اسے ایک سرپرائز رکھنا چاہتی ہوں۔ ان کیس اگر میری بک پبلشڈ ہو جاتی ہے، آئی فیل کہ آپ میری ریکویسٹ میں ضرور انٹرسٹ لیں گے اور میرے لیے کسی پبلشر کو ریکمنڈیشن لیٹر لکھیں گے، اور اس سے بھی کہیں بہتر ہوگا کہ آپ کسی پبلشر سے خود ملاقات کر لیں اور اس کی تفصیل سے مجھے بھی آگاہی کر دیں۔ میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ مجھے یہ فیور گرانٹ کر دیجئے۔ With deepest gratitude, I thank you for your attention. So students, this is the first part of the explanation. I hope you understand the letter which I have explained to you from the chapter A Helpless Situation, and the reply of this letter will be in the next video. Till then, take care, keep smiling, have a wonderful day. Thank you.